So students, today we'll discuss the topic intermolecular forces in solution. What does it mean? We know that there are two components of the solution, solute and solvent. So between solute and solvent, which type of interactions are there? Which type of attractive forces are there? This is said to be the intermolecular forces in solution. These forces are basically of six types. Number one is dipole-dipole forces. Second is ion-dipole forces. Third one is ion-induced dipole. Fourth one is dipole-induced dipole force. Sixth one is dispersion force, and sixth one is hydrogen bond force. Before I go to the topic, I want to tell you that the molecules are of how many types and what is their nature. So basically speaking, the molecules are of three main types. Number one are non-polar molecules. Number two are polar molecules, and number three are hydrogen bonded molecules. Non-polar molecules are the molecules having the dipole moment zero. जिनका dipole moment का value क्या होता है zero. That you have done in the 11th class. I'll give you the example. H2 on the both side of bond same atoms are there. Due to similar atoms, जो shared pair of electron, it is exactly in between the two atoms, due to which there is neither positive or negative charge on any of the bonded atom, and they will have the dipole moment equal to 0. Suppose if more than one bond is there, we have done in the 11th class, CH4. Now this methane, it will have the four bonds. Now see the four bonds. This is first, second, third, and fourth. The dipole moment of this bond mu1 cancels the dipole moment of second bond, making the net dipole moment 0. Similarly, the dipole moment of third bond cancels the dipole moment of fourth bond, due to which the net dipole moment of methane is also 0. So which type of molecules are said to be non-polar molecules? There are two conditions. If they will have a single bond, then both sides the atoms are same. If they will have more than one bond, then the net dipole moment must be 0. And how it comes? The dipole moment must cancel out each other. And how they will cancel? If they are in exactly opposite direction. So first type of molecules are said to be the non-polar molecules. Second molecules, polar molecules. The molecules having dipole moment not equal to 0. In the short I will say कि उनकी वैल्यू 0 नहीं होगी. It may be 1.2 whatsoever be the number. अब ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? Just see out. I'll give you the first example, HCl. Now see, these are two different atoms around a particular bond. Out of hydrogen and chlorine, chlorine is said to be more electronegative, whereas hydrogen is said to be less electronegative. Due to which, now chlorine is more electronegative, therefore the shared pair of electron, it is slightly attracted toward the chlorine, due to which the chlorine has a partial negative charge and hydrogen will have a partial positive charge. Mind you, these are partial charge, not the complete charge. Complete charge जब आता है जब इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर होता है. That is in case of ionic compounds. So this molecule will have the charge, and we know that dipole moment is a product of charge into distance. तो charge तो बेटा zero नहीं है, something value है हमारे पास. So this molecule have dipole moment not equal to 0. You understand? Same topic that we have done in the 11th class. अब अगर एक बॉन्ड है तो ये कंसेप्ट आ गया. एक से ज्यादा में भी पॉसिबिलिटी है. Just see out. I'll give you the example of ammonia, NH3. Now these are three bonds. The dipole moment of first one is mu1, second is mu2, whereas third is mu3. इन तीनों का रिजल्टेंट बेटा ऊपर जाएगा μr. क्यों ऊपर जाएगा? Because we know that dipole moment is a vector quantity. अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए. The dipole moment does not cancel out each other. एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, due to which the again net dipole moment is not equal to 0. So two type of molecules are said to be the polar molecules. Number one, if they will have a single bond, then it must be heteroatomic, means the atom on the both sides are different. If it will have more than one bond, then the bonds must not cancel out the dipole moment of each other. Mind it? So these molecules are said to be the polar molecules. Third and the last one are hydrogen bonded molecules, in which oxygen, fluorine and nitrogen, these are the nature strongly electronegative elements. They will show interactive force with hydrogen. So what is the condition for these? This hydrogen bond is shown with the dotted line. Condition क्या है? आपके कंपाउंड के अंदर होना चाहिए either oxygen, fluorine and nitrogen, whereas on the other side it must have hydrogen, due to which being strongly electronegative they will have a partial negative charge and hydrogen will have a partial positive charge. अब इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है?
इसमें तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इट मे नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम भी हो सकती है, बट अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में जाएगा, this only happens when we are having the three atoms oxygen, fluorine and nitrogen, because these are the strongly electronegative atoms. How will I identify? Just see out. HOH. Now see, partial negative, partial positive, partial positive. I am having the hydrogen, I am having the oxygen. So this molecule show which type of bonding? Hydrogen bond. किसके साथ? दूसरे water molecule के साथ. Again I draw one more water molecule. Partial negative, partial positive, partial positive. Now this positive will attract this negative, and this bond is said to be the hydrogen bond. So what is the difference between the polar and hydrogen bond? In the polar, any electronegative element may be there, but here we only require three electronegative atoms. Which one? Oxygen, fluorine and hydrogen, and they will show interaction with hydrogen. Therefore the names come as hydrogen bonded molecules. So molecule, basically we are having three types to better understand: non-polar, polar and hydrogen bonding molecules. Now we'll study the main types of forces. See now. First type of forces, dipole forces. These type of forces occurs between when both the components have dipole moment not equal to 0. Not equal to 0 means we are having both polar molecules. कैसे molecules होंगे बेटा? अगर हमारे दोनों molecules polar होंगे, then the force will be dipole forces. The example is CH3, C triple bond, Cn and CH3CO, CH3. This compound you know acetone, and this compound is common name acetonitrile. Now see out. बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, ड्यू टू विच दिस बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन पोलर बॉन्ड. माइंड दिस थिंग, दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन पोलर बॉन्ड. चलिए, तो कार्बन हाइड्रोजन का कंसेप्ट छोड़िए, यहाँ पे क्या बचा बेटा? CO. कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और बेटा इस पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव. तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया आपका? नॉट इक्वल टू 0 dipole. Same here, carbon and nitrogen. Nitrogen is more electronegative, carbon is less electronegative, so again there is a dipole. Now this dipole attract this dipole, Cn dipole attract the CO dipole, and the forces are said to be dipole forces. So question, how it comes? Question simply says which type of intermolecular forces exist between the acetonitrile and acetone. You will say dipole forces. कैसे पता चला? Dipole forces exist when the components are polar molecules. Polar molecule means both have the dipole moment not equal to 0. Understand? So now the second one is ion dipole forces. These type of forces exist if one of the component is ion and other component is dipole. Dipole means one of the component have dipole moment not equal to 0, while another component is ion, and we know that ion does not exist freely. This ion comes from an IC, ionic compound. यानी कहने का मतलब है कि one of the component is ionic compound and another component is your, what will I say? Mu not equal to 0, polar compound. So I'll give you an example. NaClO4. If I will take NaClO4 combines with water, this is a solution. Now we know that water is HO and H. NaClO4 बेटा Na positive, ClO4 negative, तो water delta negative, delta positive, delta negative. ये क्या है बेटा? This is a dipole. एक ये दूसरा डायपोल भी है, बट ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज द शेप इज बेंट. तो ये डायपोल ये है, दूसरा डायपोल ये है. नेट डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू 0. NaClO4 में I will have any positive charge, whereas ClO4 negative charge. Now you well understand, this positive charge is attracted by this negative charge, whereas this negative charge is attracted by this positive charge, and the forces are said to be ion, and this side dipole forces. So in the short, what will I say? Ion dipole forces. One more example, NaCl अगर आप लें, Na positive, Cl नेगेटिव, और उसको भी अगर आप वाटर में डाल दें, सेम टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे. व्हिच वन? आयन डायपोल फोर्सेस. सो टू फोर्सेस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आगे चलने से पहले एक बार फिर देखते हैं डायपोल
when the components, that is solute and solvent, both are polar molecules, इसमें क्या होगा, one of the component is an ionic compound, another component is a polar compound. Are you well clear that polar compound is a compound that will have the dipole moment not equal to 0. चलिए थोड़ा आगे चलते हैं. Ion induced, this type of force exists, बेटा इसको रब करते हैं, we don't have a space, just see out. Third is ion induced dipole, means one of the component is ion, whereas induced dipole means जो आपका कंपोनेंट है उसमें डाइपोल नहीं है, देन वी हैव टू इंड्यूस द डाइपोल, डेवलप करना पड़ेगा. डेवलप करने का मतलब उसमें डाइपोल नहीं है, इट मींस इट इज अ पोलर और नॉन पोलर. जस्ट थिंक, अगर डाइपोल होता देन आई विल से इट इज अ पोलर, डाइपोल नहीं है, इट विल बी अ नॉन पोलर. तो इट विल, द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एन आयन एंड अ नॉन पोलर कंपाउंड. नॉन पोलर कंपाउंड मींस dipole moment equal to 0, and we know that ion comes from where? The ion comes from ionic compound. Understand? So that's said to be the ion induced dipole force. Now see one example, ion induced dipole force. If I take NaCl plus N-hexane, NaCl I will have Na positive charge, whereas Cl negative charge. N-hexane you know, CH3 CH2 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 CH3. बेटा इस चेन में देखो, ये पूरे का पूरा हाइड्रोकार्बन किसका बना हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन. और अभी तक मैंने रब भी नहीं किया है. कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, तो हम इसको क्या मान के चलते हैं? नॉन पोलर, मींस इट विल हैव द डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0. तो विच टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग? यहां से आयन आया और यहां से क्या है बेटा? आपका एक पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स होगी that is said to be the ion induced dipole force. Understand this thing now? चलिए, next is dipole induced dipole force. Now what is dipole induced dipole? First is a dipole, means one of the component is polar component, the polar component having dipole moment not equal to 0. Second is induced dipole, means the other component it will not have any dipole moment. अगर होता तो मैं क्या लिखता? डाइपोल. बट व्हाट इज रिटन? इंड्यूस्ड डाइपोल, मींस द सेकंड कंपोनेंट डज नॉट कंटेन एनी डाइपोल. सो आई सेड टू बी अ पोलर एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर मींस डाइपोल मोमेंट क्या हो गया बेटा? उसका 0. तो एक पोलर मॉलिक्यूल और एक आपका कैसा मॉलिक्यूल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल. आई विल गिव यू द एग्जांपल, वाटर एंड xenon. जस्ट सी आउट द केस. Now water and xenon, water अभी हमने डिस्कस किया था, ज्यादा टाइम हमारा गया नहीं है इसमें. वाटर इज बेसिकली अ पोलर मॉलिक्यूल, HOH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. ये आपके दो डाइपोल हैं, μ1 और ये बेटा μ2, कैंसिल आउट नहीं करते, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. xenon is a noble gas and we know that the nature of noble gases are, these are non polar, means they will does not have any charge. So this dipole attract the noble gas with a force that is said to be the dipole induced dipole force. In place of noble gas I can take one more example. किसी भी गैस का आप एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज आई विल टेक आयोडीन. आयोडीन को हाउ विल आई ड्रॉ? I. This is clear. Due to similar atoms there is no charge, dipole moment 0. Now this dipole attract this I2 molecule with a force that is said to be the dipole induced dipole force. Understand now? चलिए, the four types we have done. Recall करते हैं आगे जाने से पहले. First is dipole between the two polar compounds of solution. Ion induced dipole, one of the compound is an ionic compound and another compound is a written dipole, means polar compound. Ion induced dipole force, one of the component is a ionic compound whereas the another component is a non-polar compound. Dipole induced dipole, one of the component is a polar, another one is non-polar. Now come to the dispersion force. Dispersion force exists between the two non-polar components. जो आपके दोनों ही कंपोनेंट्स अगर बेटा नॉन पोलर हो जाए, किसी भी तरह की फोर्स नहीं, फॉर एग्जांपल N-hexane plus N-heptane. Hexane का जनरल फॉर्मूला रिमेंबर फ्रॉम द 11th क्लास, C6H14 plus C7H
16 these two. अब इसमें भी देखिए बेटा क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, और इसमें भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये भी क्या है बेटा आपका डायपोल मोमेंट जीरो, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो। तो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को एक बहुत ही वीक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज सेड टू बी द डिस्पर्जन force. Understand? So how will you identify dispersion force between the two non-polar compounds? Understand now? Last one, hydrogen bond. Hydrogen bond. मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जब आपके थ्री स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और उनके अपोजिट साइड में क्या आ जाए, हाइड्रोजन, तो वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। जस्ट सी नाउ, सपोज बेटा वन कंपोनेंट आई हैव टेकन वाटर, और यू विल से फर्स्ट between the two components which forms hydrogen bond with each other, जो आपस में क्या बनाएंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज सेड टू बी द हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस। एग्जांपल हम देख के चलते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। सपोज आई गिव यू वाटर प्लस इथेनॉल, ध्यान से देखना है, water is HOH and ethanol is CH3 CH2OH। ध्यान से देखिए, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। बेटा कार्बन हाइड्रोजन में क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, यहां पर आइए OH पे, ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा एंड द फोर्स इज सेड टू बी द हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। अंडरस्टैंड नाउ? मैं इसको डाइपोल नहीं कहूंगा, डाइपोल कह सकता था अगर यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता और वहां पर ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता। ध्यान कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड कब आएगा, जब तीन एलिमेंट्स होंगे, आइदर नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, एंड अपोजिट साइड हाइड्रोजन। फिर से क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, and on the other side I get hydrogen, then is said to be the hydrogen bond forces. Sometimes we will get confused between the hydrogen forces and dipole. So be clear, dipole can exist anywhere when there is a electronegativity difference, means on one side of the bond less electronegative, other side of the bond more electronegative. But hydrogen bond only comes with three strongly electronegative elements, oxygen, nitrogen and fluorine. So beta, this is the complete topic of intermolecular force that will exist in the solution, and this is very important question. आपको पहले पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उनमें कौन सी फोर्सेस होती है। तो अगेन आई रिकॉल 6 टाइप्स, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डिस्पर्जन फोर्सेस, एंड इन द एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस।